starting, these questions are mostly regarding with the kinematics and the thermal physics. So that would put an end to the whole Rivian thing. So with today's lecture, we are going now just focus on the lecture. No, nothing else. Okay. So the very first question is they have asked us to find out in which region the graph has the greatest power being developed by the motor. So we know that the power is given as work done over time, and it has a direct relationship with work done and inverse relationship with time. So we have to see where in which area does it have the, तो हम लोग मोस्टली इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं हम लोग किस चीज पे फोकस करते हैं कि स्टीपेस्ट पोर्शन ऑफ द ग्राफ कौन सा है. So if we see the steepest portion of the graph, which part of the graph would that be? Hafsa. B. That is B. Because C हमें decrease को show कर रहा है, D constant को show कर रहा है, A is only the beginning. So leaving us with only one option, which is option number B. So here at that point, the power would be maximum. Moving on to the next question, electrical energy may be obtained from nuclear fission. We have done this question and many of you have not attempted this question first. It's a nuclear fission reaction. What would occur in a nuclear fission reaction? सबसे पहले क्या आएगा? न्यूक्लियर फ्यूल सब में कॉमन है. न्यूक्लियर फ्यूल के बाद रिएक्टर एंड बॉयलर. न्यूक्लियर फ्यूल के फौरन बाद उन्होंने जनरेटर लिखा हुआ है. सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी करेक्ट होगा. These two options would not be correct. Will lead to C and D. Okay, first two things are common. Boiler के बाद generator आता है या turbine आता है? हमदान. Hello. जी बोलिए. I'm asking you कि after boiler do we get turbine or generator? Hafsa. टर्बाइन आता है बॉयलर के बाद. टर्बाइन फर्स्ट आएगा, जनरेटर के बाद. हाँ, जनरेटर बिल्कुल लास्ट में आता है. So option number D. Moving on to the next one, they have asked us which row state the type of energy stored in the cell and how this energy is usefully transferred to the lamp. तो energy stored in the battery कौन सी होगी? Chemical energy. So option number A and B करेंगे. How energy is usefully transferred to the lamp? तो वो by electric current होता है या by light होती है energy transfer? Arham, would it be transferred by light or by electric current? stored in the cell chemical होगी और दूसरी होगी usefully by light. एनर्जी ट्रांसफर टू लैंप बाय लाइट होगा या बाय इलेक्ट्रिक करंट होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी कैरी करेंगे. यस. लाइट के थ्रू थोड़ी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है लैंप को, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है टू द करंट. Okay. A scientist uses a motor to lift a load through a vertical distance of 2 meters. He then increases the input power to the motor and repeats the experiment. उसने हम input power increase कर दिया. The efficiency of the motor does not change, which correctly describe the effect that this has on the useful work done, lifting the load and the time taken to lift it. अब उसने efficiency को बोला it has not changed, which means if efficiency is not changed by increasing the power, would there be any change in the work done? We have two things here. Power has increased, but efficiency has remained same. So what effect would it be on the work done? Would it decrease or would it stay the same? Hafsa. वर्क डन सेम रहेगा, टाइम चेंज कम हो जाएगा. Yes.
वर्क डन हमारे पास सेम रहेगा एंड टाइम टेकन वुड बी reduced because again power is equals to work done over time. So agar if power has increased, time must be decreased and works should remain constant in order to get the efficiency of value same. Then we need to find what is the change in pressure on the surface if the box fall overs onto face Q. If we have face Q, तो pressure क्या होगा, change होगा. तो पहली दो options तो वैसे ही हम लोग choose नहीं करेंगे. What would be the reason of not choosing option number A and B, boys? Why would we not choose A and B? हरिया इतनी देर से रिप्लाई क्यों कर रहे? क्योंकि वो बहुत काम है, नहीं, वो बहुत काम है, इतनी छोटी वैल्यू आ ही नहीं सकती उनको जब मतलब सम लेंगे इनका सबका। क्योंकि यूनिट गलत है उसका। फाइनली किसी ने ध्यान दिया कि उसका यूनिट ही गलत है, इस वजह से हम लोग ऑप्शन नंबर ए एंड बी को नहीं देखेंगे. देन वी हैव सी एंड डी. सी के अंदर से हम लोग देखते हैं, डी के रिस्पेक्ट से देखते हैं. अच्छा, अब उसने हमें बोला है कि इट इज नाउ फेस क्यू पे हमारे पास जो है इट्स लाइंग डाउन लाइक दिस, दैट फेस क्यू इज इन कॉन्टेक्ट विद द surface. So which two things are in contact? This 0.50 meters and 0.20 आएगा. आई गेस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो व्हाट विल गेट, 1 आ जाएगा. आई गेस 0.52 0.1 आ जाएगा. दैट वुड बी द एरिया and weight is 15. So pressure is equals to force per unit area. Force is 15 and area is 0.1. So 15 divided by 0.1 would give us 150. Change in pressure उसने कैलकुलेट करने को बोला हुआ है हम लोगों को. तो फिर this is 150 newtons per meter square and for now उसका प्रेशर क्या बन रहा है, 0.20. अभी इस पोजीशन में उसका प्रेशर कितना बन रहा है, 15 over 0.20 times 0.30. 250. So difference of pressure फाइंड करने को बोला है, तो 250 minus 150 would give us 100 newtons per meter square. Did you guys get it? Hafsa? जी. Anyone who wants me to repeat this question? Yes. कर दे रिपीट। पहले हमने प्रेशर कैलकुलेट किया इस पोजीशन के अंदर जो उसका बन रहा था. एरिया हम लोगों के पास ये दो वैल्यूज थी, ठीक है. एरिया हमेशा हम लोग वो बेस एंड विड्थ का लेते हैं. तो एरिया हम लोगों ने कैलकुलेट किया, दैट केम आउट टू बी 250. फिर जब उसने पोजीशन क्यू पे उसको शिफ्ट किया तो अब उसका एरिया क्या बन रहा था, 0.50 into 0.20. We multiplied it, we found the area, put in the equation और हमें न्यू एरिया प्रेशर क्या मिला, 150 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर. He asked us to find out the change in pressure. तो हमने दोनों को आपस में क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया to find out the change in pressure. Okay? Yes. Then agla is very basic. Liquid is evaporating, not boiling. Which statement about the liquid is correct at the instant of time? It's not boiling. Okay? So any molecule can escape and from any part of the liquid. Any molecule can escape but only from the liquid surface. Option number A and B में से कौन सा चूज करेंगे?
Yeah, only molecules with enough energy can escape and only from the liquid surface. Which would be the most suitable answer? We know that when evaporation occurs, only the particles with enough energy could escape only from the surface because उसने हमें बता दिया है कि it's not boiling. So option number C would be the right option. Then solids vibrates only and liquid could move around each other. I have not read the question, but obviously solid and liquid की उन्होंने properties discuss किए हुए हैं. So that would be the right option. A log thin bar of copper is heated gently and even along its length. What happens to the bar? As it's a copper, conduction could occur and it becomes less heavy, it becomes longer, it becomes shorter, it bends at the end. So what would be the most suitable answer? It becomes longer because heating would causes the expansion. Shorter हो नहीं सकता cause heating causes expansion. It bends at the end. Bending सिर्फ तब होती है जब हमारे पास if it would have been a what bending कब होती अगर ये हमारे पास क्या होता बायोमेटालिक स्ट्रिप होती कोई और मेटल अटैच हो तो बेंडिंग होनी थी only and it becomes less heavy. It has nothing to do heating का उसको मेल्ट तो हो नहीं रही कोई surface मूवमेंट तो नहीं हो रही जिसपे हम कहेंगे कि जी वो हमारे पास कर रही है इस तरीके से. अब नेक्स्ट है the diagram shows a flask filled with what do we have here filled with the liquid room exit room temperature. When the flask is placed in warm water, the liquid rises up the tube. When the flask is put in cold, the liquid rises below the original level in the tube. The experiment is repeated using an identical flask but a different liquid via. The initial level of the liquid in the tube is the same as that in the original experiment. Liquid Y expands more per degree increase in temperature than liquid Y, X, which rho is correct for the level of liquid. Rises most in water and falls most in cold water. अब rises most तो होगा obviously उसके अंदर क्योंकि उसने हमें बता दिया कि उसका टेम्परेचर क्या है ज्यादा है उसके कंपैरिजन में एंड बिकॉज इफ समथिंग ये वो उससे है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बेसिस पे हो सकता है कि मटेरियल्स हैविंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉलर with smaller heat capacity they get warm and cold easily. तो उसकी बेसिस पे विच कुड बी द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी कि वो इजीली कूल वार्म अप होगा एंड कूल डाउन होगा. बेस ऑफ द फैन के थ्रू कौन सी हो रही है कंडक्शन वुड इट बी अ गुड थर्मल कंडक्टर और पुअर थर्मल कंडक्टर as base of the fan is metallic so good thermal conductivity and handle is plastic so poor thermal conductivity. So right option would be option number B. Moving on to the next one, they have asked us to, student carries out an experiment by pulling 4 different boxes across the floor. The result are shown on the table. Which box is the most work done? Frictional force needed to pull the box 5, 10, 15, 20 and distance moved by the. We know that the work done is maximum when the distance travel in the direction of force is maximum. So work done सबसे ज्यादा किस में बन रहा है आई गेस ऑप्शन नंबर डी में ही तो इसमें क्या बनेगा 80 इसमें कितना बनेगा 30 इसमें बनेगा 20 और इसमें बनेगा 20. हाँ सो मोस्ट वर्क किस में आ रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में एंड देन उसने बोला स्टोन फॉल्स विच रो गिव्स द एनर्जी चेंज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हाइल फॉलिंग उसका इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा हफ्सा इब्राहिम है आपके साथ नहीं. हाँ जी जीपी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी व्हाइल फॉलिंग
डिक्रीज होगी। So option number A and B, and kinetic energy क्या होगी? Increase होगी. Cause according to law of conservation of energy, increase in kinetic energy is equals to decrease in potential energy. Only if air resistance is ignored. Moving on to the next one. ये हफ्सा बताएंगे. हफ्सा is very good with these questions. अल्फा है इसका। क्योंकि याद है आपको इस वजह से. जी 40 बनेगी वैसे भी इसकी अगर पावर। हाँ इसका वैसे भी इसमें हमारे पास जो है 100/2 सबसे ज्यादा डिस्टेंस. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन ओवर टाइम. टाइम इज सेम. mgh का फॉर्मूला लगा देंगे. तो इसमें बन रही है 20, नहीं 200. इसमें बन रही है 150 mgh की बेसिस पे. m is 10, g is 10 and h is 2. तो वो पुट करके देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमारे पास किसमें बन रहा है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर. Okay. The temperature of the gas in a sealed container of the is constant value. Volume decreases from 20 to 12. अब उसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है from 20 to 12, which अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा? होगा। बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है और सिंस टेम्परेचर इज डिक्रीज तो प्रेशर भी ऑटोमेटिकली क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. एंड एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल भी क्या करेगा? डिक्रीज. हाँ, अगर वो हमें ये कहता कि प्रेशर टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो वॉल्यूम के डिक्रीज होने से प्रेशर ने क्या होना था? इंक्रीज होना था. Moving on to the next one. Our teacher makes a statement object P has a higher thermal capacity than object P. अभी हमने इसको डिस्कस किया था कि substance with higher thermal capacity means it takes longer to heat up and cool down. तो अब कौन सी ऑप्शन बनेगी इसमें? Which is the right one? The increase in temperature of object P is smaller than that of object Q for the same increase in internal energy. That is the right option. Object P has higher melting point than object Q. Object P has lower melting point. We cannot predict due to the thermal capacities alone. Then we have a weightlifter picks up a stone and places it on a shelf. Each lift takes the same time. Which situation requires the greatest power? तो obviously जिसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा. डिस्टेंस से ज्यादा किसमें ट्रेवल कर रहा होगा? ऑप्शन नंबर बी. Although size of the ball is a bit smaller than that of A, but distance उससे थोड़ा सा ज्यादा है तो mgh की बेसिस पे आंसर हमारे पास बिगर ही आएगा. अरे सर, ये क्या C1 का पेपर है? Is that something to be focused on this time, Hamdan? वैसे आप स्क्रॉल कर रहे थे ना, नजर आ रहा आपका So the person lifts a book from a floor level to a shelf. It falls to the floor and second person lifts it back up to the shelf. Which statement must be correct? Second person does the same work on the book as the first person. That is pretty much the true thing. Because दोनों ने जो है बुक का weight भी change नहीं हुआ, बुक की height भी change नहीं हुई. So both must have done the same amount of work done. The second person takes the same time as the first person. We cannot be sure about that. The second person develops the same power as the first person. As would not know about the time, तो हम उसको भी discuss नहीं कर सकते. So yeah. अब again उसने बोला है कि in which position elastic strain and kinetic energy is present. तो somewhere in the middle जो होगी उसकी value
स्ट्रेन एंड काइनेटिक जो है वो दोनों होगी. सो मिडल अप्रोक्सीमेटली कौन सी वैल्यू बन रही है हमारे पास? क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया कि फुल लेंथ इज 60 एंड अनएक्सटेंडेड लेंथ इज 30. सो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज इस पोजीशन में ऑल ऑफ द एनर्जी वुड बी जीपीई. So the leaving us with only option, which is option number C. Then we have liquid is stored in the tank. The area of the base of the tank is 2.2 meters square, and the pressure at the base due to liquid is 1500. So we have pressure in an area. Weight calculate करना. So pressure is equals to force per unit area होता है, and force would be equals to pressure into area. 15,000 times 2.2 is going to give us a value of 33,000. Then उसने बोला है diagram shows a sealed gas cylinder with a movable piston. The piston is moved slowly downward and there is no change in temperature. Now we know that कि यहाँ पे Boyle's law apply हो सकता है. PV is equals to constant. What happens to the average distance between the gas molecules and to the pressure of the gas? So if the piston is moving downward, ठीक है, this means the volume would increase. So average distance between the molecules would automatically decrease. So, and pressure in the gas would increase. Clearly, jab this piston would be moved downward, so particles would get closer to each other, and when they get closer to each other and temperature is constant, the volume would decrease and the pressure would increase automatically. Then इसने बोला है कि in which example is thermal expansion unwanted? So there is only one option in which it is unwanted. और हमने previously भी एक किया था कि यहाँ पे वो unwanted होती, बाकी सब में ये इसकी applications है thermal conductivity की, thermal expansion की, sorry. Then they have asked us to find out the time kill power के accordingly. Power is equals to किसके equal होता है? FD over T के, and T would be equals to FD over T. तो वो कौन सी ऑप्शन बन रही है? FD over P is option number B. Then उन्होंने हमें बोला हुआ है the temperature of the gas remains constant, which means product of P1 V1 is equals to P2 V2. P1 and V1 is respectively this, and V2 उन्होंने हमें दिया हुआ है. We need to find out the value. Let's see if we are going to get the answer directly. 2 exponent 5 times 80 divided by 20, we're getting 8,000. अच्छा, to fill both cylinders उन्होंने बोला हुआ. So उसमें volume जो है, one cylinder contains this, the other cylinder contains vacuum. Both cylinders evacuated. So volume of the evacuated cylinder is 20 centimeter cube. The tap is opened and the gas can flow to the. फिर हम इसमें 60 और 20 का लॉजिक लगा के देखते हैं. 2 exponent 5 times 60 divided by 20, we are getting 600,000. Since initial pressure and volume is this, and final volume would be 100, because 80 plus 20 would be 100 centimeter cube. So 2 into 10 raised to power 5 times 80 equals to P2 into 100 centimeter cube. Because volume तो फिर हमारे पास 80 से 20 जब total volume बनेगा तो वो कितना बन जाएगा? 100 हो जाएगा. And I guess अब से ही आ जाएगा. 2 zeros इससे cancel out हो जाएंगे and we'll get 1.6 into 10 raised to power 5 pascals. Now we are getting this right answer. I repeat, pressure is P1 is this, V1 is this.
P2 we need to calculate, and V2 would be equals to 80 plus 20, 100 centimeter cube. Then उसने हमें बताया हुआ है we need to calculate the energy, and we know that energy is equals to mc delta theta. अगर उसने यहाँ पे जाउल्स पर ग्राम्स दिया होता तो हमें मास को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, बट सिंस इट्स नॉट गिवन तो हम मास को डिवाइड बाय 1000 करेंगे. सो 200 times 900 times 90 divided by 1000 से क्यों डिवाइड करें, ताकि वो मास को उसमें कन्वर्ट करने के लिए. So 200 times 900 times 90 divided by 1000. We get 16 to 100. C, option number C. Then thermometer based question, and उन्होंने बोला हुआ which design would result in a more sensitivity. Sensitivity of a thermometer could be increased by वॉल्यूम से इंक्रीज हो सकता है हमारे पास. रेस्ट ऑफ द रीजंस वैसे तो हमारे टॉपिक नहीं है. एंड ये हमने क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स किया हुआ. पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, mgd के ऊपर, और वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा, fl के ऊपर. तो विच वुड बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए. देन उसने बोला है कि द same mass of gas is trapped in 4 identical cylinders by a piston that can move. The diagram shows a sample of gas in different condition of volume and temperature. Which list gives the pressure of gas in order from lowest to highest? Since the temperature is not constant, तो हम लोग relationships उसके against जाएंगे. तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमारे पास किस में है, प्रेशर उसने बोला है. प्रेशर सबसे ज्यादा किस वाले पॉइंट पे होगा हमारे पास, फोर्थ, क्योंकि सबसे ज्यादा कोलाइड भी उससे कर प्रेशर रहे हैं. प्रेशर 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 पिस्टन इस टाइम पे हाँ. सबसे ज्यादा ऊपर है. नहीं, प्रेशर उसमें सबसे ज्यादा लेस है ना, फिर जिसमें पिस्टन ऊपर है. उसने कहा फोर्थ फ्रॉम में सबसे लोएस्ट टू ज्यादा, हाईएस्ट जाना है. लोएस्ट टू हाईएस्ट, फिर 1 होगा, फिर हाँ, 3 होगा, 3 फिर होगा, 2 फिर 2 फिर 2 होगा, होगा, एंड देन 4 फिर होगा. 4 होगा. बी ऑप्शन. A solid and a gas are each given the same increase in temperature. The gas is kept at a constant pressure, the one which expands the most. कौन expand करेगा most? Obviously gas. And reason उसका क्या होगा? The molecules in solid are held ए together by strong electrolytic force. नहीं नहीं सर, वो तो ए नहीं होगा इसका. उसने कहा है with the reason which expands the most, the one which expands the most, and the reason. तो उसके ऊपर देखे ना, रीजन, मॉलिक्यूल्स इन गैस ईच एक्सपेंड मोर देन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स. ए पढ़ें सर, उसने ए कहा है the molecule in the gas expand. मॉलिक्यूल एक्सपेंड नहीं होता, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीज होता है. मॉलिक्यूल इटसेल्फ एक्सपेंड नहीं होता. मॉलिक्यूल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि अगर मॉलिक्यूल का साइज ये था तो अब वो ये साइज ये हो जाएगा. Whereas we know that कि मॉलिक्यूल के साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीज करता है व्हेन एक्सपेंशन occurs. ओके, उसने अब हमें स्पीड कैलकुलेट करने को बोला हुआ है. काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, सो 1/2 mv स्क्वायर. रीअरेंज करेंगे. सो 2 into काइनेटिक एनर्जी इज 400 डिवाइडेड बाय मास विच इज 2. कैंसिल आउट हो जाएगा. 400 का अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 20. हाँ, 20 आ जाएगा. हाँ जी यार, हम हमदान, ये आपने क्वेश्चन किया था. व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन. इंक्रीज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लोड में कौन सा डिस्टेंस आएगा, अपवर्ड्स. तो विच वुड बी द राइट ऑप्शन, डी, सी, ए और बी. इट वुड बी बी. Because ये original position of the load था, and now this is a new position, the distance traveled is only this, option number D. Efficiency is given, and we know that efficiency is found out to be useful output over input. So output input to the generator is 12 kilojoules. हमें output calculate करना, basic है 65% times 12 kilojoule, kilo 10 raised to power 3 हो जाएगा, is equals to output.
65% ऑफ 12 किलो जॉर्ज ले लें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? We're getting 7800. 7800 को राउंड ऑफ करें, आई मीन साइंटिफिक मिलेंगे तो 7.8 किलो जॉल्स बन जाए. In hydroelectric power station, water from a reservoir falls down a long pipe before entering the turbine. The turbine then turns the generator. What is the overall energy conveyed? तो अगर वाटरफॉल हो रहा है तो पोटेंशियल काइनेटिक इनटू क्या होगा? टरबाइन में बाद में इंटर हो रहा है तो ओवरऑल एनर्जी कन्वर्जन क्या होगी? पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रिकल होगी या काइनेटिक इनटू इलेक्ट्रिकल? आई गेस पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रिकल होगी. पोटेंशियल होगी क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमेशा यूज हो जाती है. हाँ, नहीं नहीं, ऑब्वियसली जब वो फॉल करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी ना. अब उसने फाइनल कन्वेंस तो इलेक्ट्रिकल में ही है ना, तो इलेक्ट्रिकल से ऑप्शन नंबर डी में ही गिवन था. बाकी में स्टेट प्रॉपरली नहीं आ रही. लेकिन फिर कॉज काइनेटिक kinetic इनटू energy काइनेटिक एनर्जी नहीं, काइनेटिक इनटू केमिकल एनर्जी नहीं होगा. इलेक्ट्रिकल इनटू पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा. इलेक्ट्रिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा. कॉज ये तो ऑब्वियस रीजंस हैं जो कि रॉन्ग है, लीविंग अस विद ओनली वन ऑप्शन. सीएन में हमारे पास क्या होता है? हीलियम कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोजन या which statement about fission of fuel is correct? During fission, hydrogen converts into helium. No. During fission, uranium converts into daughter product and release energy. Yes. During fusion, helium converts into hydrogen. No. And during fission, uranium converts. No, leaving us with only option, which is option number B. देन उन्होंने हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है एफिशिएंसी का. उसने एफिशिएंसी ऑफ द मोटर कैलकुलेट करने को बोला है. इनपुट उसने हमें दिया हुआ है एंड आउटपुट हमें कैलकुलेट करना है. तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर टाइम होता है, वो एफ डी ओवर टी बन जाएगा. एफ इज 400, डी इज 6 डिवाइडेड बाय 20. सो 20 यहाँ से 20 आ जाएगा, 620 120 आ जाएगा. सो 300 डिवाइडेड बाय, सॉरी, एफिशिएंसी इज यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट. तो इनपुट इज 300, आउटपुट हमारे पास कितना है? 120. सो आंसर क्या आ जाएगा? Multiplied by 40. ऑप्शन नंबर सी. ये इनपुट था, उसने हमें मेंशन आउट किया हुआ. आउटपुट हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर ली और बस इसको पुट के यहाँ से निकाल लिया. अब उसने कहा है कि यंग बॉय हैज रिलीज अ बॉल फ्रॉम हेयर. हमें एनर्जी चेंज बतानी है. तो अगर हमारे पास हाइट से जा रहा है तो has gravitation, the ball is released, the ball is falling into which sequence correct transformation of gravitational potential energy into. तो gravitational potential energy to obviously direct किस में जाएगी? Kinetic to elastic potential energy to kinetic. Cause जब वो hit करेगी तो वो compress होगी and will bounce back, तो फिर again kinetic energy में convert होगी. So option number C. How much power would be released if 1 kilo into 10 raised to minus 20 kilogram was entirely converted to energy? The speed of light is this. कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? अरहम. ये लगेगा. ओके, आराम आराम. ओके. बाय द वे mv स्क्वायर लगेगा. सो Yes. 1/2 mc mv square. mc square. mc स्क्वायर. mv स्क्वायर नहीं होगा, वेलोसिटी है. mc square भी तो वही होता है, c speed of light है ना. ओके. Einstein mass energy equation ना. So 1 in 10 raised to power minus 20 times 9 into 10 raised to power minus 4. Option number D.
एंड उसने बोला है एट विच पॉइंट डज द बॉल हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो वो जब मिनिमम पोजीशन पे होता है, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर एक्सट्रीम हाइट के, अगर हम पेंडुलम की बात भी करें तो एक्सट्रीम हाइट्स पे जीपीई होती है, यानी इन दो पॉइंट्स पे क्या होगी, जीपीई मैक्सिमम होगी। यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे कन्वर्ट हो रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एग्जिस्ट कर रही है। नहीं सर, एक समझ नहीं आई। बी पॉइंट बी से वो नीचे आ रही है, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वहीं से ज्यादा नहीं होगी? बेटे मैं वही आपसे बता रहा हूँ कि मीन पोजीशन जो होती है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन जो होती है, वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर उसकी जीपीई मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे उसकी मीन पोजीशन कहाँ पे बनेगी, सी पॉइंट पे आके या बी पॉइंट पे आके? सी पे। ठीक है। एंड देन वी हैव स्पीड ऑफ लाइट व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 2 किलोग्राम, तो हम बेसिकली इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो mc² किस में बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। अगेन वो इज इक्वल टू mc² का फॉर्मूला लग जाओ। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, अभी अभी हमदान हमने ये क्वेश्चन किया है, विच पॉइंट डज इट विल हैव द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी? बिटवीन 1 and 2। अरे बिटवीन 1 and 2 पोजीशन 3 हमारे पास बनी ना। और दो ऑप्शन है, द फर्स्ट टाइम एट पोजीशन 3 और लास्ट टाइम एट पोजीशन 3। फर्स्ट टाइम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम पे तो वो इवेंचुअली किस पे आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, तो कन्वर्ट एनर्जी होगी। वैसे ही जीरो हो जाएगी, वैसे ही जीरो हो जाएगी, थर्मल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होके। नहीं, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। हाँ तो मतलब वो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं रह जाएगी ना, वही बता रहा हूँ। मतलब दोनों हमारे ठीक ही हैं पॉइंट्स, बट रीजन उसकी यही बनेगी। अब उसने कहा है वेट ऑफ द गर्ल इज 500, 10 seconds it take times, vertical height is 5 meter, पावर कैलकुलेट करनी है, तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर टाइम, 500 times 5 divided by 10, let's see what is the answer coming, 250 watts 100 सर, 100। 500 into 5। ओ सॉरी, ये divided by 250 होगी 10, सर। हाँ सॉरी 250 सॉरी हो सॉरी। गया। ओके 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 ओके।